Hello everyone. Write down friction. Friction is just another force. We have seen tension force, we have seen normal reaction force. Now we have another force which is friction, and everything else is same. We'll still draw free body diagrams, we'll apply F equals to ma. Everything which we have done in laws of motion so far is valid for friction also. But first, let me ask you a few things. Let me see what your observation is. Suppose a person starts moving east. You're standing on a rough surface. And you ask him to move east. This guy is standing on a rough surface, and you ask him to move east. So as he starts moving east, if I ask you what is the direction of friction, is it east or west? Then what would you answer? Write down this thing first in the comment box. As this person starts moving east, what according to you is the direction of friction? Well, that's what I expected from you, that everybody will write west. And since everybody wrote west, west is not the correct answer. यही चीज अपने को सीखनी है फ्रिक्शन में, पहली चीज, which is the direction of friction. आप लोगों ने क्या सोचा कि भाई आदमी जा रहा है ईस्ट, और आपको ये सिखाया गया था अभी तक that friction opposes motion of an object, and therefore immediately you thought कि भाई जो friction होगा, Fr for friction, will be acting west. That's what you thought. But this is wrong. Now, why is it wrong? Let's take advantage of free body diagram to answer this thing. ये जो आदमी है इसको अपन ने एक सिंपल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया. पूरा आदमी ऑफ मास m. इस पर नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg. इस पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? n. Drawing free body diagram of this man. Now, first tell me this. mg and normal reaction, क्या ये दोनों फोर्स इस आदमी को इस सरफेस पर चलने के लिए हेल्प कर सकते हैं? mg which is acting vertically down, normal reaction which is acting vertically up. Can these two forces help this man when he starts moving on the horizontal surface?
I will repeat my question with some technical words. Can these vertical forces help this man when he starts moving on this horizontal road? Hopefully information clear हो गई होगी अभी तक. वर्टिकल फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनकर आता है? जीरो. कंपोनेंट मतलब असर, इफेक्टिवनेस. एनजी एंड नॉर्मल रिएक्शन ये हॉरिजॉन्टली इसको कोई हेल्प नहीं कर सकते. एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने भी यही आंसर दिया होगा. नाउ एम क्या था हमारा कि आदमी कहां जाना चाहिए? ईस्ट. नाउ इफ आई आस्क यू, यू हैव अ ब्लॉक and you want to move this block east. Listen again. You have a block and you want to move this block east. If you want to move this block east, V for velocity of movement, which in this case is east. तो अगर मैंने आपसे बोला कि भाई आपको इस ब्लॉक को ईस्ट मूव करना है, फोर्स कहां लगना चाहिए, ईस्ट और वेस्ट? आंसर दिस इन द कमेंट बॉक्स. कि आपके पास एक ब्लॉक था, आपसे बोला गया कि भाई इस ब्लॉक को ईस्ट ले जाओ, तो आप फोर्स कहां लगाते? फोर्स ईस्ट लगाते या वेस्ट लगाते? सिंपल क्वेश्चन. फॉरगेट अबाउट फ्रिक्शन, भूल जाओ कुछ फ्रिक्शन था. ये है क्वेश्चन, सिंपल सा. गुड. तो हर आदमी क्या बोलता कि भाई इस ब्लॉक पर इस तरफ एक फोर्स होना चाहिए, और जो फोर्स है इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ईस्ट. अगर इस सिंपल ब्लॉक की बात हो रही होती. नाउ कंसीडर दिस. ये भी ब्लॉक है, इसी का ये फ्री बॉडी डायग्राम है. अब इस आदमी पर आप अपनी तरफ से फोर्स नहीं लगा रहे हो. He has to generate this force himself. While moving, he has to generate this force himself. Now, mg is acting downwards, normal reaction is acting upwards. These two forces, they cannot help in horizontal movement. He wants to move east, and if you say he generates a force of friction which is west, then he will move west only. लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? He has to move east. That means अगर इस आदमी को चलना है east, starting from west, he starts moving east, then friction between his shoes and ground. This arrow is for the direction of friction between his shoes and ground. It should be east. अभी भी आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा हो क्या रहा है, तो वेस्ट होना चाहिए था. सर ने इसको फ्री बॉडी डायग्राम्स के हेल्प से ईस्ट प्रूव तो कर दिया, लेकिन इसको फील करने का पार्ट अब शुरू करते हैं. नॉर्मली आप अपने दिमाग में क्या रखते हो? दैट फ्रिक्शन इट अपोजेस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग. फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से सुनना. अगर आपसे बोला जाता that this surface is completely frictionless. Imagine a surface and you are standing on a slippery surface, completely frictionless. Now write down in the comment box, is it possible for you to walk on a slippery or completely frictionless surface? Yes or no? There is no friction and you want to move. Then I hope, which I can see also, everybody is writing no, which is the correct thing. अगर फ्रिक्शन नहीं है, स्लिपरी सरफेस है,
तो आप आगे या पीछे कहीं भी मूव नहीं कर सकते। विच मीन्स अगर हमने मूव करना है, अगर हमने मोशन क्रिएट करना है, तो हमें किसकी जरूरत है? फ्रिक्शन की। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है हमारा, दैट फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, दिस इज नॉट करेक्ट, एंड वी विल राइट दिस स्टेटमेंट नाउ। बट बिफोर दैट, note down everything, make a cross, write down this, draw the free body diagram, and then we'll write few statements. Can you guys see the full board or some portion of it is cut? Just write down yes or no, some of you. Okay, good. Well, one of you is saying some portion is cut. One of you is saying some portion is cut. Does anyone else also have the same problem? Okay. Now write down the statement. Friction does not oppose friction does not oppose motion of an object. Friction does not oppose motion of an object. It opposes relative motion. What is the difference between motion and relative motion? It opposes relative motion between two surfaces which are in contact of each other. It opposes relative motion between two surfaces which are in contact of each other. Now let's understand this statement. फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो मैंने क्लियर किया कि ये बॉडी मूव ही नहीं कर सकती थी। तो अगर आप मूव करना चाहते हो तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? फ्रिक्शन की। अब फ्रिक्शन को मोशन से कोई मतलब नहीं, उसको रिलेटिव मोशन से मतलब है। इस पार्ट को समझना। जब ये आदमी ईस्ट जा रहा था तो आपको क्या लगा कि भाई बॉडी जा रही है ईस्ट, तुरंत लगाओ फ्रिक्शन कहां? वेस्ट। बट नाउ अंडरस्टैंड दिस कि जब ये आदमी मूव करता है, जब आप मूव करते हो, और चाहो तो अभी आप इस चीज को वेरीफाई कर लेना जहां आप बैठे हो, कि जब आप मूव करते हो तब आप अपने शूज को ग्राउंड के रिलेटिव पीछे की तरफ पुश करते हो।
नाउ अगेन, जब आप चलना चाहते हो नॉर्मल कंडीशन में आपको ये फीलिंग नहीं आती, बट इफ यू लुक एट एन एथलीट हु इज पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, लेट्स से 100 मीटर रेस, तो आपने देखा होगा कि वो एथलीट इस तरह से खड़े होते हैं, थोड़ा आगे झुककर क्यों? जिससे कि वो अपने शूज से ग्राउंड को कहां पुश कर सकें? पीछे की तरफ। ना, आपके जो शूज हैं वो ग्राउंड के रिलेटिव कहां जाना चाहते हैं? पीछे। आपने ग्राउंड को कहां पुश करना है? बैकवर्ड्स। तो जो ग्राउंड और शूज के बीच का रिलेटिव मोशन है, relative to the ground, your shoes have a tendency to move backwards, and therefore friction to oppose this relative motion, to oppose this backward relative motion, acts in the forward direction in this form and generates a force which starts motion in the object. फिर से, जब आपने चलने की कोशिश की, आप रेस्ट पर थे, आपने चलने की कोशिश में क्या किया? आपने एक शू को ग्राउंड पर पीछे की तरफ पुश किया। मींस ग्राउंड को आपने अपने शू से कहां पुश किया? पीछे। इफ यू से दिस इज एक्शन, हमने ग्राउंड पर एक्शन कहां लगाया? पीछे। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ग्राउंड हमारे शूज पर फोर्स कहां लगाएगा? In the forward direction. So your action is backwards and reaction force is what? In the forward direction, and that reaction force is pointing east and is therefore generating this eastward motion. अब जो हमारा स्टेटमेंट था, हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा था? Friction opposes relative motion, and then last line was between two surfaces which are in contact of each other. Somebody who is looking at the upper part of the body, he cannot apply this statement. He cannot use this statement. Upper part is moving east, but upper part of the body is not in contact with the ground. What is that which is in contact with the ground? His shoes. And shoes have a tendency to move backwards. Shoes have a tendency to move west. To oppose this westward motion, friction acts in the forward direction, which in this case is what? East. Let me see if you understand this much regarding the direction of friction. If you understand the whole logic, write down yes. If you are confused, write down no in the comment box. Feel free. If you are confused, simply write no. Well, quite a few of you are confused. कोई इश्यू नहीं, इधर देखना। पहली चीज, look here. इसने चलना कहां था? ईस्ट। तो अगर आप किसी बॉडी को ईस्ट ले जाना चाहते हो, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या डेवलप किया हमने? फॉर ईस्टवर्ड मोशन देयर मस्ट बी अ फोर्स विच इज ऑल्सो एक्टिंग ईस्ट। नाउ, या तो आप अगर खड़े हुए हो और आपको कोई पीछे से पुश करे, तब आप कहां जाओगे? आगे। बट सिंस दिस external force is not present, you have to generate this force yourself. So what you did,
You can imagine something like this. Suppose there is a wall just behind me. Now, if there is a wall just behind me and I want to move forward, one thing I can do is what? If I push against the wall in this direction, if I push the wall, then I hope you can visualize wall in turn is going to push you back and you will move east. Now, there is no wall and therefore we'll take help of what? Friction between our shoes and the ground. अब हमने क्या किया? चलने के लिए हमने अपने शूज से ग्राउंड को कहां पुश किया? पीछे. मतलब हम शूज को कहां मूव कराना चाहते हैं? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेस्ट. जैसे ही ग्राउंड के रिलेटिव शूज वेस्ट जाना चाहेंगे, with respect to ground, if shoes have a tendency to move west, then the statement says friction opposes relative motion of two surfaces which are in contact of each other. So the moment your shoes, they develop a tendency to move back. They're not exactly moving back. They're not. They develop a tendency to move back. Ground, with the help of friction, opposes this backward motion. This backward motion is being opposed with the help of what? Friction. And to oppose backward force, the type of force you need is what? A forward force, which is east in this case. अब इस एथलीट वाले केस से इस एग्जाम्पल को फिर से समझना. एथलीट वाले केस से क्या समझना कि जब आपने इस एथलीट को देखा who starts this 100-meter race, रेस स्टार्ट करते वक्त क्या उसका बॉडी पोस्चर हुआ करता है? लाइक दिस, सो दैट ही कैन पुश द ग्राउंड. इनफैक्ट पूरा का पूरा झुकते हैं, यू नो दैट, सो दैट दे कैन पुश द ग्राउंड बैक. नाउ जब रेस फिनिश हो रही होती है उस वक्त अगर आप उसकी बॉडी को देखें, then at that time they are holding their body like this. At that time, what is happening when he is trying to stop himself? जब हम रोकने वाले पार्ट को समझेंगे तो शायद आपको ये फ्रिक्शन का मीनिंग और क्लियर हो जाए, ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाए. जब वो एथलीट अपने आप को रोकने की कोशिश करता है उस वक्त क्या हो रहा है? लेट्स विजुअलाइज दिस. सो this is the horizontal surface. This is the horizontal surface. हमने अपने एथलीट को सिंपल एक बॉक्स के फॉर्म में दिखा दिया है. Now right now velocity is what? 0. सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज की हेल्प से समझते हैं. ये 0 पर है, आपने इसको ईस्ट मूव करना है. फोर्स कहां लगाया? ईस्ट, which is FR. A body at rest is under this force. ध्यान रखना, इस बॉडी के पास शूज हैं और वो शूज कहां पुश कर रही है? बॉडी बैक. इस फोर्स की वजह से कुछ देर बाद इस बॉडी ने वेलोसिटी डेवलप कर ली 10 meters per second because of the force. अब आपसे बोला गया कि भाई हमने अपनी रेस को खत्म भी करना है. Ultimately, at the end of the race, we have to come to rest. तो फाइनली जब आप यहां पहुंचेंगे, जो इसका V है, it should be 0. At the last point, when this athlete, his velocity becomes 0, he stops himself. His velocity at the last point becomes 0. And if I ask you,
An object is moving east, in which direction you must apply a force which can decrease its velocity? Write down the answer in the comment box, especially those who are confused in the first part. Question is simple. A body is moving east. You need to decrease his velocity 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. In which direction one must apply force? Good. The answer is what? To decrease his velocity, force, which is nothing but friction, should act in this direction. At the starting, force was east. At the end, force is what? West. पीछे की तरफ force, velocity आगे की तरफ, velocity decrease होगी and it becomes what? 0. Velocity 0 थी, increase करना है, force कहाँ लगा आगे. Now, to generate this backward force, what he does, which you can also visualize, if you want to stop your body, then you need to push the ground with your shoes in the forward direction. Ground को shoes से आपने कहाँ push किया आगे? Try to visualize this thing. Try to visualize this part. Ground को shoes से आपने कहाँ push किया आगे? Ground के relative shoes अगर आगे जाना चाहेंगे, तो हमारा statement क्या बोलता है? Friction opposes relative motion. These shoes now, they have a tendency to move forward or east, and therefore to oppose the forward movement, force of friction acts due west. जैसे ही फोर्स पीछे लगा, वेलोसिटी आगे थी, इस फोर्स ने वेलोसिटी को डिक्रीज किया और क्या बना दिया? 0. अब अगर आप ग्राउंड को आगे पुश करना चाहते हो, तो फिर आई होप यू कैन फील दिस कि आप बॉडी को ऐसा होल्ड करोगे एंड यू आर ट्राइंग टू पुश द ग्राउंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. जब आप रेस स्टार्ट करते हो, एट द वेरी बिगिनिंग, आपका बॉडी लुक इस तरह का है जिससे कि आप इजीली ग्राउंड को पीछे पुश कर सकें. लेकिन जब आप रुकना चाहते हैं, तब आपका बॉडी पोस्चर इस तरह का है जिससे कि आप ग्राउंड को कहां पुश कर सकें? आगे की तरफ. दैट मीन्स व्हाट? In the beginning, this athlete is moving east. At the end also, athlete is moving east. Throughout the 100-meter race, athlete is moving east. But friction in the beginning is acting east. At the end is acting west. Now tell me, do you understand this part a little bit more? Or if you are still confused, write down no again. I'll think of something else. Write down the statement. We'll take the help of this example of athlete only. When an athlete starts a race, at the beginning, he is trying to push the ground. He is trying to push the ground with his shoes in the backward direction. Now, since his shoes are in contact with the ground, are in contact with the ground,
friction will oppose this backward relative motion by acting in the forward direction. And since friction is a force, this force increases his velocity. At the end of the race, when he tries to stop himself, when the athlete tries to stop himself, he pushes the ground with his shoes in the forward direction. And to oppose this forward relative motion, friction acts in the backward direction. Now, as a force, since friction is opposing velocity of the athlete, his velocity decreases. Now what happens in normal situation when you walk, you don't feel this thing. But I hope everybody has at one point of time you must have felt something like this. Suppose you are moving and something slippery comes between ground and your shoes. Suppose there's a newspaper lying between ground and your shoes, and if you're walking carelessly, then you must have observed that newspaper or that piece of paper, it simply moves in the backward direction. Why? Because you're trying to move forward and you're trying to push everything in the backward direction with the help of your shoes. So something which lies between the ground and your shoes, that is being pushed back because of the force which we are talking about. Or you can imagine this, if you're walking on sand, then you must have seen that you're trying to, as you try to move forward, the sand, you're trying to push it back. You can see, you can feel कि जो आप sand है उसको आप कहाँ push कर रहे थे, पीछे की तरफ. Normally जब आप ground पर चलते हो तो नॉर्मल कंडीशन में आपको मालूम ही नहीं चलता कि आपने फोर्स कहाँ लगा दिया, आगे लगा दिया या पीछे लगा दिया. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आप इजीली विजुलाइज कर सकते हो कि चीज कहाँ लग रही है. लेट्स सी कितना आपको समझ में आया है. इफ आई मूव दिस डस्टर, look, if I move this duster due east, again, if I move this duster east, then what is the direction of friction? East or west? Write down in the comment box. When I move the duster against the board due east, then what is the direction of friction? Is it east or west? इसका मतलब आपकी समझ में बहुत कम आया है. कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर लिखा है, ज्यादातर लोग ईस्ट लिख रहे हैं.
क्वेश्चन क्या था, मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा कि डस्टर को मैंने फोर्स लगाकर कहां मूव करवा दिया? ईस्ट ना। आपने क्या बोला कि डस्टर ईस्ट जा रहा है। सर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि ईस्ट जाएगी चीज तो ईस्ट लगेगा फ्रिक्शन। आपको ये लगा, जितने लोगों ने ईस्ट लगाया इसका मतलब दे आर नॉट केयरफुल इनफ। मैंने ये बोला ही नहीं था कि कोई चीज ईस्ट जा रही है तो फ्रिक्शन ईस्ट लगेगा। एथलीट स्टार्टिंग में भी ईस्ट जा रहा था, फ्रिक्शन ईस्ट था। जब वो रुकना चाह रहा है तब भी वो ईस्ट ही जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन कहां लग रहा था? वेस्ट। फ्रिक्शन का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या था? हमारा स्टेटमेंट। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? फ्रिक्शन अपोजेस relative motion. अब this duster cannot move on its own. It's not a living thing. It cannot move on its own. This duster is moving east because of this force. इस डस्टर पर मैंने फोर्स आगे लगाया, मैंने लगाया। इस फोर्स की वजह से ये डस्टर ग्राउंड पर या इस बोर्ड पर ईस्ट जा रहा है। How do you define direction? Friction opposes relative motion of those two surfaces which are in contact of each other. This duster is in contact with this. And this surface, at this surface you can see that it's moving east. इसके पास कोई शूज नहीं है, ये आगे की तरफ जा रहा है। अगर ये आगे की तरफ जाएगा तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहां लगेगा? इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए वेस्ट। तो फिर डस्टर आगे क्यों जा रहा है? इसकी वजह से जा रहा है। आपने इस डस्टर पर क्या लगाया? आपने इस डस्टर पर आगे की तरफ फोर्स लगाया है। लेकिन ये जो आदमी था हमारा, इस आदमी को अगर ईस्ट मूव करवाना था, there is nobody who is pushing from this side. He has to generate this force himself, and therefore he develops friction in this direction, which is east. There is a difference between this setup and this setup, duster and this man. लेकिन दोनों में फंडामेंटली अगर देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसके शूज ग्राउंड के रिलेटिव कहां जाना चाहते थे? वेस्ट। ग्राउंड ने फ्रिक्शन कहां लगा दिया? ईस्ट। ये जो डस्टर है ये कहां जाना चाहता है? जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो कहां जाना चाहती है? ईस्ट। फ्रिक्शन कहां लगेगा? वेस्ट। क्या आपको इन दोनों सिचुएशन का डिफरेंस क्लियर है? यस और नो? दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन में एक बार डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद इट्स सिंपली एप्लीकेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एम ए। Write down the statement also. When duster is moving east, when duster is moving east, it is because of force F. But since its contact surface is moving east with respect to ground, friction is acting west.
friction is acting west. इस डायरेक्शन पार्ट को और क्लियर करते हैं, देखना। इंपॉर्टेंस किस चीज की है? इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना, relative motion. Look here. There are two bodies A and B. B is kept on top of A, and somebody exerts a force in this direction. You're pulling body A, B is on top. Friction between A and ground, we'll call it FR1. Friction between B and A. इस पॉइंट का मतलब नहीं, पॉइंट से मतलब इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर जो फ्रिक्शन है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर जो फ्रिक्शन है, we'll call it FR2. So between A and ground, FR1, between A and B, FR2. Now get me the direction of FR1 on A, FR2 on B. Write down the question. Find out direction of FR1 on A and direction of FR2 on B. Direction of FR2 on A. Direction of FR1 on A. This is the first question. Direction of FR2 on B. Third, direction of FR2 on A. पहली चीज, इस FR1 पार्ट को समझना। कैसे समझोगे, यहां देखना भाई। आई होप ये सेटअप दिख रहा होगा। बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। ए एंड बी का मूवमेंट अपने को दिखाना है। होपफुली अब अच्छे से दिख जाएगा आपको। जस्ट अ सेकेंड। I'll ask you a simple question first. This is block B, and ये जो board है, this is A. आपको बताना है कि मैंने इस बोर्ड को आगे की तरफ खींचा, ईस्ट। जस्ट टेल मी कि जो ब्लॉक था बी, ये आपको कहां जाता हुआ दिखाई दिया था, ईस्ट और वेस्ट? जस्ट आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन।
and then you will learn something special regarding friction. Let me repeat the whole thing again. आपको ये कहाँ जाता हुआ दिखाई दिया? And as expected, everybody has written west, which is not correct. ये जो ब्लॉक था ये ईस्ट मूव कर रहा था. तो आपको लग रहा होगा हो क्या रहा है, सर सामने चीजें दिखा रहे हैं और जैसा दिखा रहे हैं वैसा फील नहीं हो पा रहा. अब देखना कैसे आप फील करते हो. ये है ग्राउंड फ्रेम. हमने एक मार्कर यूज किया हुआ है. Like this represents what ground. अगर कोई चीज इसके आगे होगी, राइट नाउ यू कैन सी ये जो बोर्ड ब्लॉक है ये इसके साथ अलाइंड है. ये है ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये है आप. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था. क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि ये चीज इस ग्राउंड फ्रेम से अगर आगे निकल जाएगी तो फिर आपने क्या बोलना था, बॉडी कहां गई है, ईस्ट. अगर ये इससे पीछे निकल जाती तो फिर आपका आंसर आना चाहिए था वेस्ट. इस लाइन को थोड़ा पीछे की तरफ ड्रॉ कर दूं. केयरफुली देखना, ये फ्रिक्शन है इजी, बट केवल डायरेक्शन के इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएं. ये अपना एक ग्राउंड रिप्रेजेंट करने के लिए एक मार्कर है. There is a pole or something like that. A reference frame, simple. Now, ब्लॉक ग्राउंड के साथ अलाइंड है. मैंने क्या किया था, मैंने इस चीज को आगे की तरफ पुश किया था. आपने किस चीज का आंसर दिया, विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड. लेकिन आप हैं क्या, ग्राउंड ऑब्जर्वर. फिर से देखना, मैंने इस बोर्ड को आगे की तरफ पुश किया. Can you see that with respect to ground, this block has a forward movement or a movement due east? Can you see east movement, yes or no? Fast. अभी ये ग्राउंड के साथ अलाइंड है. मैंने इसको आगे पुश किया. आपने किस चीज का आंसर दिया, इसका. दिस इज वेस्ट. लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा था, आप ग्राउंड ऑब्जर्वर हैं. ग्राउंड ऑब्जर्वर ने देखा कि ये ब्लॉक इस ग्राउंड मार्क से कहां गया हुआ है, आगे की तरफ. अब ये कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाली है, इस चीज को अपने को समझना है. विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, with respect to ground, B is moving east. Write down this. Write down the statement. With respect to ground, B is moving east. But with respect to A, B is moving west. इनफैक्ट आप क्या करो, आप एक और भी प्रॉपर फिगर बना सकते हो इस तरह से.
जैसा मैंने दिखाया एग्जैक्टली इसी तरह का अपन एक फिगर डेवलप कर लेते हैं. Over here. इस बी को बिल्कुल मैंने यहां पर कॉर्नर पर फिट कर दिया है. आई होप फिगर दिख रहा होगा. एंड देन आफ्टर सम टाइम दिस इज इनिशियल पोजीशन. द होल सेटअप looks like this. It was at the very edge of the block A, and then once you pull it with this force F, this is the new position of B. So for this new position of B, if somebody asks you, there are two observers. First one is this. There is an observer, let's call it observer 1. This observer 1 is standing on block A itself. And there is a ground observer. Let's call him observer 2. And this is your observer 1. This observer 2 is ground observer. And observer 1 is standing on the block A. For ground observer, this block is moving east. But for this observer, who is standing on the second block, on the block A, what he finds that block B has slightly moved backwards. पहले कहां पर था? एज पर. अब कहां पर है? पीछे. फिर से सुनना. ये ब्लॉक यहां पर था at the very beginning, but after some time ये ऐसा दिखा. अब जो आदमी ग्राउंड पर खड़ा है उसको दिख रही है कि चीज आगे आई है, लेकिन जो आदमी इस बोर्ड पर है, ऑब्जर्वर 1, अगर आप इस आदमी से पूछते ऑब्जर्वर 1 से कि भाई ऑब्जर्वर 1 तेरा मूवमेंट कितना है, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, चीज यहीं से क्लियर होगी. अगर ऑब्जर्वर 1 से पूछते ऑब्जर्वर 1 से कि वो कहां गया है, ईस्ट और वेस्ट, क्या आंसर होता? देखिए कितना केयरफुल है आप. इफ आई आस्क ऑब्जर्वर 1 दैट वेयर इज ही मूविंग, ईस्ट और वेस्ट, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया. अगर आप ऑब्जर्वर से पूछोगे तो रिलेटिव मोशन में क्या सीखा है अपन ने? रिलेटिव मोशन में आपने क्या सीखा हुआ है? ऑब्जर्वर ऑलवेज फाइंड्स हिमसेल्फ एट रेस्ट. तो अगर आप इस ऑब्जर्वर 1 से पूछते तो ये बोलता कि वो तो मूव ही नहीं कर रहा है. आपसे पूछा जाए अभी जब से क्लास चल रही है तब से आपने कितना मूव किया है, तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं. लेकिन आप किस पर बैठे हो? अर्थ पर. और अर्थ इतनी देर में 25 किलोमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है. आपको पता है कि आप कहां से कहां पहुंच चुके हैं. सो द पॉइंट इज, इफ यू आस्क दिस ऑब्जर्वर 1, if you ask an observer who is standing on the board, then he says he is not moving at all, but he finds that the block B has moved backwards. This is what is the observation in different frames. तो जब मैंने आपसे पूछा कि ये चीज यहां थी और मैंने इसे यहां मूव किया, ये चीज यहां थी
मैंने इसे यहां मूव किया तो ग्राउंड वाले ने क्या बोला, आगे, लेकिन ऑब्जर्वर वन ने क्या बोला, पीछे. Are you comfortable with this final conclusion that with respect to ground, B is moving forward, but with respect to A, B is moving backward? Yes or no? And if it is no, then कुछ ना कुछ करना, visualize करना, practice करना, because it should be a definite yes. यहां से अपनी कहानी को डेवलप करते हैं. बी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. बी का आपको लगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर को लगा कि ये बी कहां जा रहा है, ईस्ट. किसको लगा, इसको लगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर को लगा बी जा रहा है ईस्ट. व्हाट शुड बी द रीजन बिहाइंड इट्स ईस्टवर्ड मूवमेंट? कौन सी वो चीज है जो इसे ईस्ट ले जा रही है? ये फोर्स नहीं, ये फोर्स किस पर लगा है, ए पर. बी पर क्या लगा होगा, ए और बी के बीच का फ्रिक्शन. तो ग्राउंड वाले ने क्या बोला कि ये बी अगर आगे जा रहा है, देयर मस्ट बी सम फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन बी, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट FR2. That force is nothing but FR2. अब फिर से ग्राउंड के रिलेटिव ब्लॉक ईस्ट जा रहा है, तो फिर इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन वेस्ट क्यों नहीं लगा? Who can answer this? Write down fast in the comment box. If you think you can answer this thing, you can switch on your mic also. Ground observer, he finds that block B is moving east to oppose this eastward relative motion. हमारा लॉजिक क्या बोलता था, फ्रिक्शन को कहां लगना चाहिए था, वेस्ट, लेकिन नहीं लगा. कैन यू आंसर दिस? नो रिस्पॉन्स. What was the complete statement? Complete statement क्या था? Friction opposes relative motion of two surfaces which are in contact of each other. ये भी. So because with respect to A it is moving backward, so the opposing force will be toward in the forward direction. Yeah, listen to the argument. The block B is moving forward, but it is moving forward with respect to what? Ground. Is there any contact between B and ground? No. Is there any contact between B and ground? No. And therefore, that statement of friction does not work with this block B. B is moving forward, but B is not in contact with ground. And therefore, ground observer, for him, if there is an eastward movement, there must be some force which makes this eastward movement possible. There is only one force, friction. अब फिर से देखना, हमने इस आदमी से पूछा, इस चीज को देखना भाई, ये क्लियर करेगा पूरे पार्ट को. इस बार हमने पूछा, ये जो अपना ऑब्जर्वर वन था, ऑब्जर्वर वन, जब इस ऑब्जर्वर वन से आप बात करते तो पहली चीज तो वो क्या बोलता कि भाई ये पूरा का पूरा ब्लॉक किस पर है, रेस्ट पर. एंड देन ही सेज कि भाई हमारा ब्लॉक यहां से यहां आ गया. फ्रॉम दिस पोजीशन इट मूव्स टू दिस पोजीशन.
I hope you can see the blue arrow. Look, ये ऑब्जर्वेशन किसका था? ग्राउंड. ये ऑब्जर्वेशन किसके लिए? ऑब्जर्वर 1. दिस इज ऑब्जर्वर 2. So, observer 1, he says that block B is moving west. Now you will ask him, do you find any contact between B and A? Then his answer is what? Yes. A and B, they are definitely in contact of each other. If they are in contact of each other, then statement of friction says what? Friction opposes relative motion between two surfaces which are in contact of each other. Since B and A are in contact of each other and he finds that B is moving west backwards, to oppose this backward movement, friction on the block should act in the forward direction. Look, both observers ultimately find the same thing. Friction is acting forward, friction is acting in the forward direction. But their arguments are different. He is saying that it's just a force which is making an eastward motion possible. His argument is, since block B is in contact with block A and there is a westward relative motion, to oppose this westward relative motion, there must be a force of friction which is pointing east. Now tell me, do you understand this and this both? Yes or no? Fast. This is something very important. अगर confusion है, then simply write no. लेकिन ये बहुत काम की चीज है. Different observers कैसे feel करने वाले हैं. Draw these figures and then we'll write a few statements. Write down the statement. For ground observer, inside the bracket observer 2, block B is moving east and therefore there must be some force on it, which makes it move eastwards. This force is nothing but Fr2. This force is nothing but Fr2. Inside the bracket, acting east. Argument of relative motion is not applicable in this case. Argument of relative motion is not applicable for observer 2, or in this case, because block B is not in contact of ground, is not in contact with the ground. Next line.
But for observer 1, block B is moving west and is also in contact of block A and therefore to oppose this relative motion I'm showing the relative motion with the help of V. This arrow is for V motion velocity. To oppose this relative motion, friction should act due east. And we can see that for both observers, direction of FR2 is same. देखना भैया एक थर्ड तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं FR2 का. Just tell me this, क्या इजी होता इस ब्लॉक A को मूव करना या फिर A and B दोनों को मूव कराना? What is that which you will find easier, to pull block A only or to pull A and B? If you think only A, write down A. If you think A and B both, write down A and B. What will be easier for you to move? You're moving a trolley, an empty trolley. And then if I ask you to move a loaded trolley, the question is, which one will be easier for you to pull, loaded or empty? Hopefully आपने आंसर दिया होगा that it will be easier to pull body A only. Which means what? अगर आपने सुनना इस चीज को, अगर आप B को, I'm drawing the three body diagrams, अगर आप B को A के ऊपर रखते हो तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है. ये आपने सोचा भी है कि अकेला A है, खींचना आसान है. जैसे आप B को रखते हो उसको खींचना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट. डिफिकल्टी का मतलब क्या है कि जब आप B को A के ऊपर रखते हो तो डिफिकल्टी बढ़ती है. इसका मतलब somebody is there which starts pulling A in this direction. Once you place B on top of A, कोई ऐसी चीज है जो डेवलप होती है जो A को कहां खींचती है, पीछे. दैट इज कॉल्ड डिफिकल्टी. जब B नहीं है, ये भी नहीं है, आप A को आगे खींच रहे हो. And you have to encounter this friction only between A and ground. But the moment you place B on top of A, it becomes difficult for you to pull body A because of some force which is opposing this original force. What is this force? This is force of friction FR2, which is third part of the question. इस B को जब A पर रखते हैं तो B A पर फोर्स कहां लगाता है, पीछे. एक्शन. B ने A पर एक्शन कहां लगाया, पीछे. तो फिर A B पर रिएक्शन कहां लगाएगा, आगे. Third method, you again got the direction of FR2 is east. Do you understand this part? Do you understand this logic? Fast, yes or no? और जिनको नहीं आया होगा उनको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. जैसे ही हमने इस बोर्ड को खींचना शुरू किया, when it's empty, this bottle is not there, it's very easy to pull the whole thing.
But the moment you put this bottle on top of it, it becomes difficult. Imagine there is a ground surface underneath. So when you pull this thing, this bottle is creating something like this, as if bottle is trying to pull this thing in this direction. So there is a force which is pulling this body A in this direction, and your original force which is pulling the body in this direction. This pull is friction. कहां से आया? यहां से आया. ये जो चीज आपने इस पर रखी हुई थी. सो डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए FR2 कहां है? पीछे. किसने लगाया? B ने A पर. तो B अगर A पर लगाएगा, then you will get an equal and opposite force, which is your FR2. That's how you develop concept of direction. और मेरे ख्याल में ए और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. हमसे बोला गया भाई ए ग्राउंड के रिलेटिव कहां जा रहा था? ईस्ट. पक्की बात है. कहां जाएगा? ईस्ट. ए ग्राउंड के रिलेटिव ईस्ट जा रहा है. क्या ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है? हाँ है. तो फिर फ्रिक्शन कहां लगेगा? टू अपोज दिस it will act in this direction. This is FR1. FR2, F, FR2, FR1. This is FR2, this is FR2, this is FR1 between A and this. इस FR1 का जो रिएक्शन पार्ट होगा वो किस पर लग रहा होगा? वो लग रहा होगा ग्राउंड पर. हमें उसकी जरूरत नहीं है. ए पर ग्राउंड ने कितना लगाया? FR1. तो ए ग्राउंड पे भी क्या लगाएगा? FR1. although we don't need that, but since A and B both are moving, you need to define direction of friction like this. Put on this. I hope this concept of friction and all is clear. If you're still confused, just don't worry. In the next lecture, we'll see some other setups. I'm giving you a homework. If you can find direction of friction for this setup. This is the homework part. This is A, same. This is B on top of it. It's on the ground. But this time you are pulling B. Instead of pulling A, you're pulling this top block B. बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है. You need to find FR1, direction of FR1. You need to find direction of FR2. You need to find direction of FR2 on B. Instead of pulling A, you're pulling block B. Put on this. And then again leave. Thank you very much.